What a journey it's been. You're back in the Grand Prix. How pleased are you that maybe you're where you belong now? You're back with us in this tournament. वो बोल रहे हैं कि आप ग्रैंड प्री में वापस आ गए हो, आपको कैसे लग जहाँ पे आप बिलोंग करते हो, तो आपको आके कैसे लग रहा है इसके बारे में। एंड हम काफी प्लीज है आपको यहाँ पर लेकर, तो आपका क्या टेक है इस। बिल्कुल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम ग्रैंड प्रिक्स में वापस आया। और बिल्कुल मैं 3 सितंबर को सबको दिखाऊंगी कि क्यों मैं ग्रैंड प्रिक्स डिजर्व करती थी और क्यों मैं कंटिन्यू बोल रही थी कि मैं ग्रैंड प्रिक्स डिजर्व करती हूँ। तो बिल्कुल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 3 सितंबर के लिए। So and Ritu says that she's extremely excited to be a part of the Grand Prix, and she kept maintaining from day one that she belonged to the Grand Prix, and she's proved her mettle yet again, and she thinks that she strongly and she judicially deserves to be here, and that's what gives her the kick that she's finally where she belongs. It's a homecoming experience for her. Absolutely. And now we have our first media question. This comes from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. A question for Ritu. Was there anything specific you've learned in your last 2 fights against Ben Nguyen and Lin Equin, which you can take with you into the circle Friday night? Okay, Ritu वो पूछ रहा है आपका जो ली के साथ लास्ट फाइट हुआ था, जहाँ उसका कुछ लर्निंग है जो आप अपने नेक्स्ट मैच में लेकर चलोगे? बिल्कुल हर कोई मतलब अपने हर मैच से कुछ ना कुछ सीखता है और बिल्कुल मैं भी अपने हर मैच से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो बिल्कुल लास्ट जो मेरी ली के साथ फाइट थी और मैं उसमें विन की, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है और वो कॉन्फिडेंस मुझे अपने 3 सितंबर के मैच में काफी हेल्प करेगा। So yes, every fight is a learning experience for her, and she takes some very invaluable lessons with every fight that she endures. And the last fight has made her a lot more confident as an MMA professional, and you will get to see that confidence from Ritu in the next fight. Got a question for Bo. Obviously, you've had a lot of change of opponents in the last few months. You're back now with Ritu. How's that affected your training camp and your whole preparation? 小博，就是你过去这几个月里面，就是这次八人赛的对手其实是换了几次的，这个对你来说有没有什么影响？对你的这个比赛的准备有没有什么造成影响呢？没有造成什么大的影响，就是一开始备赛的时候就是以阅读的方式去备赛的，然后最后换成他还是挺高兴的，其实。Yeah, actually, I don't feel anything different. Actually, I've been training for Ritu since beginning, and then I heard maybe some opponent changing. Then I quite just wait for they tell me who's the next. Then it's Ritu again. I'm very happy that I've been training very well. Up next, we'll take our question from Raj Shekhar from Essentially Sports. Go ahead, Raj. So I just wanted to know that she's representing India into the historic fight night. So how does she feel about it? Yeah, Ritu, राज बोल रहे हैं, पहले वो आपको congratulate कर रहे हैं कि all women's card पे आप भी featured हो। दोनों को actually congratulate कर रहे हैं, दोनों मैंगो और आपको। और आपको बोल रहे हैं इतना बड़ा ऐतिहासिक इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाली हो फ्राइडे को, तो आपको इस बारे में कैसे लग रहा है? बिल्कुल काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इतने बड़े इवेंट में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारे देशवासियों की उम्मीद है, बहुत सारे देशवासियों का सपोर्ट है, तो बिल्कुल यस काफी खुश हूँ। So Raj, she says that she's extremely elated on such a large scale, on such a momentous platform, and she says that there's a lot of hopes, that's pinning on her, and she wants to make sure that she live up to all these hopes of her fans and supporters. So yes, she feels completely on top of the world to be a part of this event. Also, I wanted to know that a few days back, Meng Bo said that knocking out Ritu wouldn't be very difficult for her. She has obviously praised Ritu's impeccable dominance in the division, but she has also said that she has got a lot more experience, a lot more prowess than the Indian Tigress. So how does Ritu react to that? रितु वो कह रहे हैं कि मैंगो ने रिसेंटली कहा था कि आपको हराना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, भले ही मैंगो ने आपके बारे में अच्छा भी कहा है, बट वो कहती है कि उनके पास डोमिनेंस है एंड प्लस उनके पास काफी पावर है एंड एक्सपीरियंस है आपको हराने
बिल्कुल मैं वो एक अच्छी फाइटर है, काफी एक्सपीरियंस है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे को मैं यही कहूंगी कि मेरे को कम समझने की भूल कभी बिल्कुल भी मत करना। जो मैं लास्ट फाइट में थी मैं उसके बिल्कुल उससे भी मतलब ज्यादा खतरनाक मैं आने वाली फाइट में हूँ, तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कम मत समझना। तो इंडियन टाइगर्स मतलब एक नए रूप में दिखेगी। Yeah, so Raj, she says that yes, she totally respects Meng Bo because she's an experienced fighter. However, Ritu is warning Meng Bo that do not underestimate her because Ritu is way more dangerous than what you've seen the last time. She is an Indian tigress, and you will see a completely different side of the Indian tigress in the upcoming match. So, just a little piece of disclaimer for Meng Bo that do not consider her any less than her. 小博，那个瑞图说，那个你不要低估他。他说他这次会向你展现什么是真正的印度泰交虎。你对此有什么看法？我希望他能撑过一回合吧。From Meng Bo, I hope she could last first round. Now my question would be to Meng Bo. Obviously, Meng Bo has all the accolades, everything to tout in front of Ritu Phogat. But like, if you look back at Ritu's last fight against Lynn Hekin, she really outclassed a veteran opponent. And Hekin is such an opponent whom both Meng Bo and Ritu share. So, is Meng Bo really confident about taking out Ritu Phogat in the first round? And if it surpasses the first round, how does she sees the fight happening? 小博，你看了那个瑞图和林和晴的上一场比赛以后，你觉得你是否有足够的信心能够在第一回合终结他？如果你有这样的信心的话，是什么带给你这样的信心的呢？我觉得场上的话应该瞬息万变嘛，但是我会努力的在第一回合就解决。Yeah, actually, everything could happen in a fight, but I have been training for a first round finish, first round knockout in this whole camp, so that's my plan. We go now to Rahul Chabra from Indian Express. Ritu, congratulations. The entire India is cheering for you. And trust me, we are so proud of you. Now, a lot of fighters actually feel that Ritu, coming from a wrestling background, is only relying on one trick, that is to take the opponent down and then dominate. So how is your preparation against Meng Bo? I'm not talking about the strategy, just the preparation, because Meng Bo is an excellent striker. बिल्कुल मैं मतलब मेरी टीम के साथ मेरे कोच के साथ तैयारी मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बहुत हमारा फाइट कैंप बहुत अच्छा गया है और बिल्कुल मैं अपने न्यू चैलेंज के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो बिल्कुल और अभी मतलब जितनी भी ट्रेनिंग की है वो 3 सितंबर को रिंग में दिखेगी। Yeah, so Rahul, Ritu says that she's been training extremely hard for this day, and all the training that she's done is something that you will witness for the next match on the 3rd of September. Ritu, आपको और preparation के बारे में कहना है? नहीं, that's it. Yeah, that's it, Rahul. Rup Saka from One Dojo. My question is to Ritu. As you have shown some progressions in the striking, do you feel that the striking will make any difference in your upcoming event? Ritu, वो कहते हैं आपने striking को लेकर इतना अच्छा बताया है in the last few matches. तो आपको लगता है अलग कुछ डिफरेंस कर पाएगा आपके नेक्स्ट मैच में? बिल्कुल मैंने मतलब हर मैच में आपने देखा होगा मेरी स्ट्राइकिंग इम्प्रूव है, तो बिल्कुल आप मेरे आने वाले मैच में भी आप मेरी स्ट्राइकिंग को और काफी मतलब और बेटर देखेंगे। Yeah, so like she's rightly saying, Hoop, if you've seen her, if you followed her progress, her striking has been improving and she's been working really hard towards honing her striking skills, and that's something that you will witness during her next. So my next question would be to Meng Bo. So in your last fight, you have faced Samara Santos and made a win out of it. So do you see Ritu Phogat as an easy opponent, or you see her as a tough one? 小博，你看待瑞图的话，你觉得他是一个就是给你送，就是你觉得是个菜，还是说你觉得他是一个很硬的对手？我觉得这不能这么评判自己的对手吧。我也做好就是随时终结的准备，我也做好打满3局的准备，我不会轻敌的。Well, I wouldn't call Ritu an easy opponent for sure. I'm ready to do a first round knockout, but I'm also ready to do a three round tough fight. Since she performed a really good
performance in her last few fights. Ritu, Meng Bo बोल रही है that you know वो नहीं कहती है कि आप एक easy opponent हो and आपको first you know first particular round में आपको take down करना while उनका गोल रहेगा वो ready है आपको you know 3 के लिए, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मतलब वो काफी अच्छी फाइटर है और यही कहूंगी कि मतलब सभी जितने भी मैच को देखेंगे, जितने भी दर्शक इस मैच को देखेंगे, वो मतलब काफी मजा आने वाला है इस मैच में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ये. Yeah, so Roop, like she rightly says, no, this one's going to be a very exciting match. It's going to be an interesting one, and although Meng Bo is an experienced fighter, you know, I think fans will be in for a delight to watch both of them take on each other. So my last question to Ritu, how has been the training camp with Evolve MMA? बिल्कुल मेरी पूरी टीम और कोच के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है, डे बाय डे अपनी हर चीज पे इम्प्रूवमेंट की है, तो काफी मतलब ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा था और बस अभी जो भी ट्रेनिंग की है वो 3 सितंबर को जाके सर्कल में दिखानी है, तो बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत अच्छी गई है. So Roop, she's been training extremely hard for this, and she's been working on her skill sets and all that she's learned. It's time to implement. It's like the rehearsals are done. It's time to give the final test, and that's what you'll see for the next match. Up next, we have a text question from Derek Wright of No Judges Necessary podcast. This is for both fighters. Being so that you've had much success early on in your careers, do you feel any outside pressures to represent your family or country? 小博，你在这么年轻的这个职业生涯就取得了这么高的成就，这一切会不会给你带来就是说压力？你对关于你要代表你的国家来出战这样一场比赛呢？我觉得我现在没有太大的成就吧，但最大的成就我就想拿到金腰带之后，就觉得自己还有一些成就，然后觉得比赛的结果很重要，但是我也享受过程。Well, I wouldn't say that I had a successful career already. I would only call myself successful once I get the belt and the Grand Prix belt and the championship belt. And I don't really feel big of a pressure because of that. And you wait till I get the championship belt, then I'm a successful fighter. Ritu, उन्होंने पूछा है कि आपने इतने यंग एज में इतनी कामयाबी पाई है, कि आपको कोई प्रेशर फील होता है, यू नो, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने यंग एज में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर आपको फील होता है? नहीं, बिल्कुल भी मुझे किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है और जितने मतलब मेरे करोड़ मतलब देशवासियों की उम्मीद है, तो वो चीज मुझे मोटिवेट करती है, मुझे और भी ज्यादा पुश करती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो मैं किसी चीज का प्रेशर नहीं लेती. मेरे को यही कि मैंने अपना हार्ड वर्क किया है और रिंग में जाकर अपना 110% देना है. Okay, so pressure doesn't bog Ritu down. She says that in fact the hopes and the love of her fans is a driver for her than a deterrent. That's something that keeps her going, and that sort of encourages and motivates her to keep getting better at her game. Up next, we have a question from Gerdu Mi. Ritu just defeated Lin not too long ago. How do you evaluate her? How do you evaluate her fight? Were you impressed by it? That one's for Meng Bo. 小博，瑞图刚刚那个上一场比赛那个赢了林和晴，你怎么评价那场比赛？你有没有就是对那场比赛感到很震惊，或者说有感触呢？觉得瑞图也是有很大的进步的，然后林和晴也是刚刚开始恢复着打比赛，我觉得还是有上升空间的吧。Well, I think Ling haven't fought for like 2 and more years, and he has a lot to improve, a lot to get used to in the cage, in the circle. But I also think that Ritu have improved a lot. I think he's a very good fighter. This one comes from Ge Du Yin, who says to Meng Bo, you used to have a little beef with Angela Lee. Are you still mad about it? 小波，你之前和李胜洙好像有一点搞得不愉快啊，来回的吵过一下。你现在还对那个事儿生气吗？还有什么感受吗？我从始至终也没有生气过，我只不过是想要拿到他那个金腰带而已。I never feel mad at all. I just want her belt. This one's from Drake Riggs to Ritu.
Meng Bo is very confident that she's able to finish you at any point in the fight. Do you believe that you can do the same? तो वो कह रहे हैं कि मैंगो बिलीव करती है कि वो आपको हरा सकती है कोई भी पॉइंट में फाइट के दौरान। तो आपको लगता है क्या आप भी उसी स्टेज पर हो? बिल्कुल मैं अपने अपोनेंट को यही कहूंगी कि मुझे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लें और बिल्कुल मैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि मुझे अपनी टेक्निक पर भरोसा हो या ना हो, मुझे अपने नाम पर बिल्कुल पूरा भरोसा है कि मैं कौन हूँ। So Andrew, Ritu says that she would like to reiterate that do not underestimate the power of Ritu Phogat. And she says that she's just like her name. She's an Indian tigress who's out on the prowl. And you will get to see that during her next match. This is another one from Drake from My MMA News. To Meng Bo, it's always nice to get the knockout. But do you think you would be more satisfied if you could submit a great wrestler like Ritu? 给小博的问题就是知道你是一个很强的一个就是 KO 的一个选手啊，但是你会不会觉得打像瑞图这种地面摔跤手的这种特色的选手，给他一个降服会更有成就感？对，我觉得降服会更有成就感，但是我还是特别自信我的战力吧。但是如果在地面的话，我也是不会怕的，因为我地面也。Well, actually, I was thinking about it, but most likely I would finish him with striking. But if the fight goes to the ground, I wouldn't fear her. Our next question comes from Anuj Damani from One Dojo. Anuj, your mic is open. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप स्टार हैं और इंडियन एमएमए का फेस है वन चैंपियनशिप में, तो आप इंडियन फाइटर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं आने वाले समय? Anuj's question is that Ritu is the star and the representative of Indian MMA, and is there any message that she'd want to bring to MMA aspirants? She's the poster boy. She's the poster girl of MMA in India. So what's the message that she'd like to give to her fans? बिल्कुल क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट को इंडिया में इतना नहीं मतलब इंटरेस्ट ले रहे, लेकिन काफी कुछ टाइम से काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिल्कुल मैं उन सभी के लिए जो इंडिया से मैं उन सभी के लिए एक रास्ता ओपन करना चाहती हूँ जो इंडिया से मिक्स मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं वन चैंपियनशिप का बेल्ट लेकर उन सभी के लिए एक मिक्स मार्शल आर्ट में मतलब वर्ल्ड में एक रास्ता ओपन करना चाहती हूँ। So Anuj, like Ritu rightly said, that by winning the one championship belt, she wants to open the floodgates for Indian MMA aspirants. She wants to be a driving force for a lot of young Indian aspirants, so that they are able to make the sport more mainstream in India, and so that they are able to represent the country at a global stage. We have Dylan Bowker of My MMA News. My first question was for Ritu because, Meng Bo has faced some big names in the sport. Wei Li Xiong, she's got a lengthy win streak here, ranked number 2 at Atomweight. What is a win here should you get the ideal outcome do for your career overall? So Ritu, Dylan आपको पूछ रहा है कि Meng Bo ने कोई बड़े हस्तियों को फेस किया है पहले इनके मैचेस में, एटम वेट में इनका रैंक 2 रहा है, तो उसको अगर यदि आप हराते हो तो ये आपके लिए कितना बड़ा विन हो सकता है, ये आपके लिए क्या मायने रखेगा? बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए हर फाइट मेरे लिए एक चैलेंजिंग रही है और बिल्कुल ये फाइट मेरे लिए इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे गोल तक पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो बिल्कुल मंबो मेरे लिए मतलब एक न्यू चैलेंज है और बिल्कुल मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। That every fight is as equal a challenge and a milestone for us as compared to this fight, and yes, this particular fight is going to be a rite of passage, so to say, in her career, and it's going to help her reach a step closer to her finish goal. So yes, it's extremely important, but as important as the other fights that she really plays. Yeah, I was just asking Meng Bo about, just drawing inspiration from Xiong Jingnan and just what it means to her to also be sharing a card with her and getting to compete. 小博，你这场比赛那个是和静楠姐一块儿在一个战卡上，
然后你有没有那个对静楠姐的一些那个想法，一些对她的感受，对她的感情，然后和她在同一张战卡上比赛，对你来说意味着什么？我觉得跟中国唯一一个万冠军赛冠军在一起打，而且是女子，我觉得是挺荣幸的。然后我们私底下关系也很好，我们都管他叫南哥，所以我觉得可能跟他一起打，我的心里会有很大的底吧。Yeah, I feel very honored to fighting the same card with the one and only China World MMA champion, and we actually call Jing Nan brother Nan when we outside the cage. We have a very good personal relationship, and I feel very calm to fighting the same card with my big sister. We go now to Fight Game Asia, who have a question for Meng Bo. Does Ritu deserve to be a part of this Grand Prix, considering that she lost to B Nguyen? 小博，就是这个问题是你觉不觉得瑞图值得在这个八人赛里面打？就是因为他不是之前输给那个软币了嘛？你怎么看呢？觉得这个八人赛的每一个位置都是自己争取来的，所以值不值得打，可能不能是我们说的吧。然后自己努力的争取来的，我觉得就值得。Yeah, I think all 8 of us have been fighting very hard to fight for this chance to compete in this Grand Prix, and I think everybody in this Grand Prix deserves it. This one's for Ritu. What do you say to your critics who say that you don't deserve a spot in the Grand Prix after your loss to B? रितु वो बोल रहे हैं कि आपके जो क्रिटिक्स है जो कहते हैं नो कि आप ये फाइट में आने के लिए डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि आप बी से हारी थे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे को ग्रैंड प्रिक्स में आने से पहले अगर अपने आप को प्रूव करना पड़े तो मैं उसके लिए रेडी थी कि मैं हर चैलेंज को पार करके मैं बिल्कुल ये दिखाना चाहती थी कि हाँ मैं ग्रैंड प्रिक्स डिजर्व करती हूँ, और बिल्कुल मैंने लास्ट फाइट में वो चीज दिखाई भी है लीन के साथ। तो और बिल्कुल मैं 3 सितंबर को भी दिखाऊंगी, और उन सभी जो ये बोलते हैं, जो सभी नेगेटिव बात बोलते हैं, उन सभी को जवाब मैं 3 सितंबर को दूंगी। Yeah, so Andrew, she says that while she always believed that she deserved this spot in the competition, you know, she's had to face challenges and she's taken it with a pinch of salt. You know, at any given point in time, Ritu has proved herself and she's proved abilities and her skill sets, and she's truly been the winning sportsman she is. So she says that, you know, she's done all the proving to see a different side of Ritu for the next match. However, having said that, she says that she's shown that she deserves to be a part of the Grand Prix as per the last win. So she says there's nothing short, she's done nothing less, or she's done nothing short of proving herself or proving her mettle time and again. And she's taking the challenge with a pinch of salt. So yes, she's proved herself, and now you will see people will be delighted to watch her play for the next match. This one comes from Ivan Stewart of Dugout Philippines. He says, Ritu, B got a chance to join the Grand Prix as an alternate last month, but she lost to the Philippines' Jenilyn Olsen. Had B won, were you looking towards a rematch with her in the Grand Prix at some stage? Were you looking forward to it? Okay, Ritu, last जो मैच था, बी का जो लास्ट मैच था उनके अपोनेंट के इस तरफ से, ठीक है, वो मैच हार गई थी, ठीक है. सो अगर वो शायद से जीत जाती वो मैच, क्या आप एक रीमैच के लिए पुश करते, यू नो, क्योंकि आपका चांस लड़का जाता ग्रैंड प्री में आने के लिए. तो क्या आप एक रीमैच के लिए पोटेंशियली देखते? बिल्कुल मैं अब भी ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरा रिमैच बी के साथ हो, और बिल्कुल मैं दिखाना चाहती हूँ कि मतलब लास्ट टाइम जो इंडियन टाइगर से उसका फेस हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट इंडियन टाइगर से उसके फेस होगा. तो बिल्कुल मैं इन फ्यूचर बिल्कुल चाहती हूँ, चाहे वो ग्रैंड प्रिक्स में आए या ना आए, लेकिन इन फ्यूचर मैं बिल्कुल उसके साथ रिमैच चाहती हूँ. Yeah, so Andrew, she says yes.
that was a fight to remember, and every bit of Ritu wants a rematch with B, and she says that the Indian Tigress that B spot in the last match is something that she will never see ever before, and Ritu will show a completely different player, completely different face in her upcoming match. And yes, she definitely would want a rematch with B someday soon.